everyone, welcome to the new video with a new chapter, The Lion and the Saint. So let's start the chapter. Chapter 3, The Lion and the Saint, Intelligence. Introduction of the lesson. The present lesson is about a kind saint who helped a lion. तो ये lesson जो है वो kind saint के ऊपर है जिसने lion की help करी, but the lion tried to eat him. Lion ने उसको खाने चाहा. Then a policeman came and saved him. तो एक policeman आया और उसने जान बचाई. So the moral here, we should not panic in difficult situations and use our intelligence. तो हमें difficult situations में panic नहीं होना चाहिए. There was a deep forest near a village. तो village के पास एक deep forest था. Once a lion was roaming in the forest. तो once जो lion था वो जंगल में घूम रहा था. While roaming, he entered the village. अब घूमते घूमते वो village में आ गया. People got scared and worried. अब people लोग डर गए, परेशान हो गए. They went to the town authorities. तो वो town authorities के पास गए. Some people gathered courage. कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई. They caught the lion. उन्होंने lion को पकड़ा, locked him in a cage में उसे lock किया and informed the city authorities को inform किया and asked them to take him away. कहा कि इसको लेकर जाओ. 2 days passed but nobody came to take him. 2 दिन चले गए, कोई लेने नहीं आया. The lion was very hungry by that time. तब तक lion जो था वो बहुत ही भूखा हो गया. People came, looked at him and went away. None had the courage to go near the cage. अब किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि वो केज के पास जाए. The lion looked at several people. Lion जो है बहुत सारे लोगों की तरफ देखता था. Requesting them to open his cage. उसको रिक्वेस्ट किया कि केज को खोल दो and let him go to the forest. कि उसको जंगल में जाने दो, but nobody would listen to him. But कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता था. A saint was watching all this. एक saint सब कुछ देख रहा था. He felt pity for the lion and asked, if I open the cage, will you not eat me up? अब उसने उसको दया आई तो उसने बोला अगर मैं ये केज को खोल दूं तो तुम मुझे तो नहीं खा लोगे. The lion replied, no, not at all. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. How could I eat the person who is going to help me? अब जो मेरी मदद कर रहा है मैं उसको तो नहीं खा सकता. He assured the saint that he would be truly grateful if he opened the cage. तो उसको अश्योर कराता है कि मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप मेरे को यहाँ से आजाद करेंगे. So the saint opened the cage and lion came out of the cage. उसने केज का दरवाजा खोला और वो बाहर आ गया. As soon as he came out, जैसे ही वो बाहर आया, he started roaring at the saint. तो वो उस पर दहाड़ने लगा. Although he thanked him for his kindness. Although उसने उसको thank बोला उसकी kindness के लिए, he said that since he had not eaten anything for several days, कि उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है, he wanted to eat him. वो उसको खाना चाहता है. The saint got terrified. Saint तो डर गया. He gathered his courage. उसने हिम्मत जुटाई and reminded the lion about his promise. क्या याद दिलवाया that he would not eat him, कि वो उसको नहीं खाएगा. But the lion was very hungry. Lion तो बहुत भूखा था and he wanted to eat something at once, कि उसको कुछ चाहिए था तुरंत खाने के लिए. Now the saint helplessly looked around. अब saint जो था वो तो helpless हो गया. Unfortunately, no one was there. वहाँ तो कोई और था ही नहीं. The saint again requested the lion to think over it. Saint ने फिर से request किया सोचने के बारे में, but the lion was adamant. Lion जो था वो अपनी बात पर अटक गया. In the meantime, a policeman was coming towards them. Meantime, एक policeman उसके तरफ आया. The policeman saw them. उसने उनको देखा and immediately sensed the seriousness of the matter. कि seriousness का उन्हें पता लग गया. What happened? Asked the policeman and saint asked for his help. उसने पूछा भाई क्या बात हो गई तो saint ने मदद मांगी. The policeman reminded the lion about the promise. तो policeman ने lion को उसके promise याद दिलाया that he had made to the saint for his freedom. कि उसकी आजादी के लिए जो दिया था. The lion replied firmly and that he was helpless. उसने कहा कि वो helpless है because he was very hungry, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, and had not eaten anything for a quite few days. और बहुत दिन से उसने कुछ नहीं खाया. The policeman thought of an idea to help the saint. अब उसने saint की बात सुन के उसको idea आया. He said that he was unable to understand the whole matter and asked the lion to explain it again from the beginning. उसने कहा कि मुझे तो ये matter समझ में नहीं आया. Lion से कहा कि भाई पूरा matter मुझे फिर से बताओ. The lion narrated the whole story. Lion ने पूरी story narrate करी. The policeman felt sorry that he still failed to understand it. Policeman ने उसको समझने से फिर उसने कहा कि भाई मेरे को नहीं समझ में आया. And requested lion if he could show him exactly how he was locked in the cage. तो उसने कहा कि तुम मुझे exactly बताओगे कि कैसे तुम्हें अंदर रखा गया. The lion said, okay. I went inside the cage to show him how he had been locked before the saint took him out. उसने क्या करा, saint ने जैसे उसको बाहर निकाला था तो उसने उसको बोला कि इस तरीके से मेरे को अंदर जाके दिखाया कि ऐसे मुझे उसने बंद किया. पुलिसमैन क्विकली सिग्नल द सेंट. उसने सिग्नल किया सेंट को एंड इमीडिएटली लॉक द डोर ऑफ द केज. उसने तभी एकदम केज बंद कर दिया उसका दरवाजा. Thus the lion was locked again in the cage and the saint was saved. तो लायन को फिर से बंद कर दिया और केज में और सेंट बच गया.
थॉट ऑफ द लेसन, वी शुड यूज आवर विजडम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपना दिमाग का यूज करना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ मेनी डिफिकल्टीज, आप निकल सकते हो. इंटेलिजेंस टेक्स यू आउट ऑफ एनी ट्रबल. कोट ऑफ द थॉट, an intelligent person learns from the foolish. Moving ahead with an exercise, tick the correct option. Which wild animal entered the village? Lion. Who opened the cage? Cage किसने खोला था? Saint ने. Who tricked the lion? Lion को किसने trick किया था? Policeman ने. Now let's do fill in the blanks with the words given. People got dash and dash. So people got worried and scared. The saint dashed the cage. Saint ने क्या करा? Opened the cage. The lion narrated the whole story. उसने narrate करी since he was locked in the cage till he came out of the cage. The lion was dashed again in the cage, locked. Right, T for the true and F for the false statements. Lion was roaming in the forest, घूम रहा था, true. Saint did not open the cage, false, उसने खोल दिया था. Lion ran away when he was free, false. The saint was saved, true. So like this, you have to go through the chapter again. We'll meet in the next video. Revise it. Bye-bye. Take care. Thank you.